So, welcome students, very special good morning to all. As we are looking for the chapter number 13, organisms and population, we have discussed the basics, introductions regarding the topic. We have already discussed the different types of biomes, what is habitat, what is niche, each and everything. टेबल में हमने डिफरेंशिएशन देखा, डेफिनेशंस देखे, थ्योरीज किसने किसने दी है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ हैबिटेट, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ नीच, एवरीथिंग इज बीइंग क्लियर. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इन द सेम चैप्टर, दैट इज द टाइप्स ऑफ नीच. As we have know that niche is something different from the habitat, correct? Habitat is a particular space and niche is a concept of living. उस particular habitat में how does the organism survives, that is called as niche. Okay, according to that concept or the technique of living in that particular habitat, niche is classified into three different types. It's a spatial or habitat niche, trophic niche, and the multidimensional or hypervolume niche. These are the three main points. Nothing more than that. Descriptively इसका कुछ आपको दिया गया नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको चैप्टर में है, तो डोंट गेट डीपर जाने की जरूरत नहीं है. सिलेबस के रिलेटेड चलना है. व्हाट विल बी द क्वेश्चन अराइज फ्रॉम इट, आपको वो थिंकिंग करनी है. उसमें से नए नए क्वेश्चंस, हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन अ फाइनल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, और इन अ नीट और इन अ एमएसटी सीईटी, व्हाटएवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. ओके, सो three types of niche में first type of niche is given, that is the spatial or a habitat niche. What is the spatial or habitat niche? It deals with the physical space occupied by an organism. देखो, although we have told that, हमने डिस्कस किया है कि niche का स्पेस से कुछ रिलेशन नहीं है, but in the first type you can think that habitat niche. Habitat बोलने के बाद niche भी है and there is habitat also. It's a habitat niche. That's why it deals with a, suppose it's a particular habitat of Markandeya Junior College, correct? There is a class of standard 12th. It's your habitat. One multi-purpose hall will be there, or one classroom will be there, correct? In that classroom you have occupied your particular space, correct? आपका क्लासरूम आपका एक हैबिटेट है, उस हैबिटेट में भी आपने सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर डेस्क, बेंच या सीटिंग अरेंजमेंट होंगी, कुछ उतनी स्पेस आपने सर्वाइव करने के लिए क्या की है, ऑक्यूपाई की है. दैट इज कॉल्ड एज अ हैबिटेट नीच. क्लियर? सेकंड वन इज द ट्रॉपिक नीच. यस, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन. Look again, think about the same example of your classroom. Your teacher is teaching to you. आपके प्रोफेसर्स, आपके लेक्चरर्स आपको लेक्चर दे रहे हैं, आपने एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई की है, करेक्ट? सो लास्ट बेंचर्स जो है या फर्स्ट बेंचर्स जो है, उन्होंने एक स्पेस ऑक्यूपाई की है, बट देयर इज अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, करेक्ट? There is a chain of communication. Generally क्या होता है, टीचर्स फ्रंट में जो बच्चे आते हैं उनसे ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, लास्ट बेंचर्स का ध्यान थोड़ा रहता नहीं है. That's why we are rotating the benches day by day. Day by day we are rotating the benches. Same thing happens in a particular niche. That how, suppose there is one chain. You have know that there is a grasshopper which eats the grass. grasshopper क्या करता है, ग्रास को खाता है. grasshopper को खाने वाला कुछ फ्रॉग होगा, फ्रॉग को खाने वाले कुछ और ऑर्गेनिजम्स होंगे. सो ये जो चेन है ये डेवलप हो जाती है, करेक्ट? सो इन दैट पर्टिकुलर चेन और इन दैट पर्टिकुलर क्लासरूम, वेयर इज द योर पोजीशन, आपकी पोजीशन वहां पे क्या है, लेवल आपकी क्या है,
उस टाइप के नीच को ट्रॉफिक नीच कहा जाता है। क्लियर? आफ्टर दैट मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम। मल्टी डायमेंशनल, as according to the word we can think that multi, different type of works will be there. Okay, different type of works will be there. So it consists both biotic as well as abiotic factors. It consists both biotic as well as abiotic factors. Biotic factors which is related to your nutrition, which is related to your daily routine, that is called as a biotic, and abiotic factors में आते हैं temperature, water, soil, rainfall. All these things will be covered. Means in a multi-dimensional or hyper-volume niche, you can consider that it is related to the multi-levels, multi-factors. It will consist of both biotic as well as abiotic factor. Okay. इन तीन niches के types को छोड़ के another niche is there, that is called as a fundamental niche. Fundamental, as according to the word, fundamental means it's a basic, मूलभूत जिसको बोलते हो आप. From the basic, it is most compulsory or mandatory to the each organism, each and every organism. हर एक organism में जो fundamental niche है वो रहेगी, that is no competition available. Generally, we can say that no competition is available means जनरली क्या होता है, सभी बच्चों को क्लासरूम में रखता है कि मुझे समझ में आना चाहिए, या जनरली एक आधी हैबिटेट हो तो सभी ऑर्गेनिजम्स को लगता है कि मुझे सर्वाइव करना है. सो I don't need any type of competition in that particular habitat. Means it's a fundamental thinking of each and every. मैं स्कूल में आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाना बेटर होना चाहिए, मुझे पेमेंट मिलना चाहिए, या मेरी फैमिली अच्छे से सर्वाइव करनी चाहिए. Means it will be think about ourselves. There will be no competition. Okay, so that is called as a fundamental niche. Okay, now niche is the more realistic approach. Yes, habitat although may change. हो सकता है मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं कहीं कल और स्टेट में जाऊँ, कहीं और कंट्री में जाऊँ, या फॉर एग्जाम्पल अबाउट द एनिमल्स. जनरली क्या होता है, समय में आप देखते होंगे कि when there is a lack of water in the forest, जंगलों में जब पानी की किल्लत होती है, कमी होती है, then the organisms or the animals which are lying in the forest are coming in the search of water in the cities and towns, in the urban areas, in the rural areas. Okay, so it is the most realistic approach towards the life. Niche is the most important factor. हो सकता है हैबिटेट खुद की कोई ऑर्गेनिज्म चेंज कर ले और उस हैबिटेट पे सर्वाइव कर ले. फॉर एग्जांपल, आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र. इट इज अ टेम्परेट रीजन, एवरेज टेम्परेट रीजन. ओके, सपोज आई मूव टुवर्ड्स द नॉर्दर्न. मैं नॉर्थ की तरफ जब जाऊंगा, जम्मू कश्मीर की तरफ जब जाऊंगा, देन माय हैबिटेट विल चेंज. माय हैबिटेट, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ टू कोल्ड. वहां पे जो सर्दी होती है, दैट इज in a minus degrees also in J&K, in Jammu and Kashmir. So my habitat will be changed. मेरा रहने का जो एरिया है that will change. But वहाँ पे मुझे वहाँ की niche के साथ मैचअप करना होगा. For what? To survive in that particular habitat. Okay? So that is the all three types of niche and the basic, that is the fundamental. सबको लगता है कि मेरे साथ कुछ competition नहीं होनी चाहिए, मुझे सबसे बढ़िया खाना या सबसे बढ़िया लिविंग स्टाइल मिलनी चाहिए, या मेरा कंसेप्ट जो है लिविंग का, दैट मस्ट बी अ बेटर कंसेप्ट. ओके, सो दिस आर द थ्री types of niche. Now from the starting we have discussed a lot more types. We have discussed a lot more types of niche, habitat, and we have also discussed the introductory part of the chapter organisms and population. Okay, so according to that I have mentioned some questions here. We have to note down these questions, we have to answer this question, and from your side also you have to generate few more questions, few more MCQs, because what happens
as according to our experience एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली आपके एक्सरसाइज से या टेक्स्ट बुक से नहीं आते हैं. दे अराइज एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं. हाउ डज दिस टेक्निक्स आर अप्लाइड इन द डे टू डे लाइफ. Okay, so all such points you have to consider, and according to that I have mentioned some main questions. Okay, important questions. Rather than this there may be lot more questions also available. Okay, so according to that I have mentioned first the define the term niche. We have already discussed. Who developed the concept of niche? Niche का concept किसने develop किया? Not discover. Discover किसी और ने किया है, उसको develop किसी और ने किया है. Okay, does niche support the numerous species? हमने एक पोर्शन देखा था, that is the difference between the habitat and niche. According to or related to that portion I have mentioned this question that does niche किसी मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज को सपोर्ट करता है या खुद के बारे में होता है. Okay, that you have to answer. What is the habitat? Yes, we have discussed. What do you mean by the biomes? The important question is an important question, that what do you mean by the biomes? Biomes क्या होते हैं? There is a particular region or particular habitat होता है, that is biomes. उसके बारे में आपको डिटेल लिखना है. Name any 4 biomes. We have discussed the graphical representation of the biomes in yesterday's lecture. So name any 4 biomes. What are the 3 main kinds of niche? Yes, we have discussed these 3 main types: spatial habitat, spatial or habitat niche, trophic niche, and multidimensional or hypervolume niche. These are the 3 main types. Okay. After that, mention the mean temperature and mean rainfall in all the biomes. Now, to answer this question, you have to again go back to the representative chart that we have mentioned. There is one bar presenting the temperature, one bar presenting the rainfall. It was a mean or average rainfall and temperature. According to that, you have to mention this graphical representation. Okay, so all of this question and all of this portion is covered. Okay, in the next lecture we will discuss the next topic. Think you have understood it. If you have some questions regarding that, you can message me or comment in the comment section. Okay, have a nice day. Thank you.